Respected the Honorable President of India, all the dignitaries, and my dear colleagues, a very good morning and namaskar. I am Sridevi BV, Officer Trainee of Indian Post and Telecommunication Accounts and Finance Service, batch of 2021. It's my honor and privilege to be a part of this august gathering headed by the head of the state. To proceed with this auspicious ceremony, may I request Secretary, Department of Telecommunications, Shri K. Rajaraman sir, to deliver his welcome speech. Honorable President of India, Srimati Droupadi Murmu ji, Senior Officers of the Department of Telecommunications, Ministry of Road Transport and Highways, and the Ministry of Defense, Officer Trainees of all the three services. I take this opportunity to express our heartfelt gratitude to the Honorable President of India for providing all the trainees and senior officers of the three different departments the honor of being here and sparing her valuable time to address these young minds. It is indeed a great honor and privilege for the officer trainees of the Indian Posts and Telecommunication Accounts and Finance Services from the National Institute of Communication Finance, Central Engineering Services Roads from the Indian Academy of Highways Engineers, the Indian Naval Material Management Services from the Indian Naval Services of Hamla, to get an audience with the Honorable President of India and seek guidance at the beginning of their careers. All these officers have started their career journey in government services in the Azadi Ka Amrit Kal and are going to play a key role in transformation of India and fulfilling the dreams of India at 2047. It will be my duty to quote Bharat Ratna Sardar Vallabhbhai Patel. He says, "Along with discipline, you must cultivate an esprit de corps without which a service such has no meaning. You should regard it as a proud privilege to belong to the service, covenants of which you will sign, and to uphold throughout your service its dignity, integrity, and incorruptibility." Unquote. Now, Honorable Madam, it would be my proud privilege to submit certain important functions being played by the officers of all these cadres present here. There are 45 officer trainees of the IP&T Accounts and Finance Services present here, including 14 lady officers. They have been recruited to the Civil Services Examination, which is conducted by UPSC every year. Officers of this cadre are dedicated to the functions of the Department of Telecommunications, like revenue assessment, securitization and collection of revenue license fees, conduct of spectrum auctions, collection of spectrum usage charges, monitoring and disbursement of subsidy for telecom projects in rural and remote areas, disbursement of terminal benefits to the pensioners, asset management, accounting, auditing, budgeting, and finance advice, as well as internal audit. They also contribute towards important policy formulations in the department. Officers of the cadre also work in the Department of Posts in similar roles. Officers also get opportunities to serve central ministries and organizations on deputation. To discharge their functions smoothly, they are trained at the National Institute of Communication Finance for 104 weeks on various subjects relating to their domain. During training, emphasis is given on their overall development and exposure is given to various institutions to acquire specialized knowledge. NICF, an apex training institute of the Department of Telecom and one of the recognized central training institutes of the Department of Personnel and Training, is fully focused in preparing these young officers to take up any professional challenge. Madam, the Central Engineering Services Roads is an organized Group A cadre recruited through the Indian Engineering Services exam conducted by the UPSC every year. Officers of this cadre are dedicated to the task of sustainable, quality, efficient, and safe development and maintenance of national highways and expressways, formulating and administering policies for road transport with a view to increasing the mobility and efficiency of the road transport system so as to accelerate socio-economic development of the nation. They also carry out detailed review of national highways networks with a view to developing the road connectivity to border areas, development of coastal roads, including road connectivity for ports, improving efficiency of national corridors, development of economic corridors, inter-corridors, feeder routes, and greenfield expressways, etc., under the Bharatmala Pariyojana to provide last mile connectivity.
Officers of the CES roads are trained in the Indian Academy of Highways Engineers, an apex training institute under the administrative control of the Ministry of Road Transport and Highways, for sharing of knowledge on entire aspects of highways, road infrastructure engineering, and imparts foundation training to the officers of the CES roads. IAHE trains these officers in the fields of highways engineering, bridge engineering, tunnel engineering, project management, land acquisition, financial and administrative processes, personality enhancement skills to develop officer-like qualities, and other important aspects so that they can deliver successfully on the ground. Madam, the officers of the Indian Naval Material Management Service is an organized Group A engineering service under the Ministry of Defense, Navy, constituted in August 2017. Officers are recruited through the engineering services examination conducted by the UPSC every year. INMMS officers carry out material management functions related to inventory of more than 8 lakh items involved, such as provisioning, procurement, warehousing, transport logistics, round-the-clock fueling, preservation, information technology, disposals, personnel management and administration, budget management, warehousing infrastructure development, etc., working in tandem with the other service counterparts. These officers are involved in material logistics, support to state-of-the-art equipment like gas turbines, engines, radars, sonars, air conditioning plants, etc. They also undertake export of critical stores to ships deployed in foreign waters in liaison with defense attaches of various countries to meet operational requirements. These officers are posted in various directorates under the integrated headquarters, MOD Navy, and various naval units like material organizations, naval dockyards, base victualling yards, DGNP, weapon equipment depots, etc. The officers undergo ab initio training for 18 weeks at the INS Hamla and other naval units. Training curriculum of 6 modules include familiarization to naval organization, material management in Navy, followed by visits to various naval ships, submarines, naval units, and private industries. Madam, I am confident that all these young, talented youngsters, beginning their career in different sectors, with your blessings and guidance, will contribute to their share towards nation building and spread the ideal of Vasudhaiva Kudumbakam for sustainable development of this planet. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Honorable President, training period is considered to be the most memorable period in the lives of the officer trainees. They learn the fundamentals of the government functioning, build memories, and to cherish throughout their lives. To share such indelible experiences of the training period, may I call upon Dr. Tejas Ramakant Mahire, Officer Trainee of Indian Post and Telecommunication Accounts and Finance Service. माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं इस ऐतिहासिक हॉल में उपस्थित सर्व अधिकारीगण और मेरे सहकर्मी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार एवं जोहार। मैं डॉक्टर तेजस रमाकांत महिरे, भारतीय सिविल सेवा के महत्वपूर्ण अंग, भारतीय डाक तथा दूर संचार लेखा एवं वित्त सेवा का प्रशिक्षु अधिकारी, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष आज अपने प्रशिक्षण के अनुभवों को साझा करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। संचार समाज और राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोए रखने का अहम माध्यम है। चाहे वह दूर देहात में रहने वाला मेहनतकश किसान हो जिसे मौसम की जानकारी चाहिए, या वो एक क्वारंटाइन मरीज जिसे कोविड-19 जैसी महामारी में अपने घर परिवार से जुड़ना हो, चाहे वह जनजातीय क्षेत्र का एक आकांक्षी विद्यार्थी जिसे IIT जैसे उच्च संस्थान से ऑनलाइन माध्यम से ज्ञानोपार्जन करना हो, या वह कोई सीमा पर तैनात जवान जिस दुश्मन की गतिविधियों की सूचना हाई कमान को देनी हो। यह संचार ही है जिसने हमारे देश की विकास यात्रा को समावेशी तथा विविध बनाया है। आज संचार ने ही पूरे विश्व में फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति ला दी है, जिससे व्यक्तियों के आर्थिक व सामाजिक स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। महोदया, हमारे प्रशिक्षण की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी के फाउंडेशन कोर्स के साथ हुई, जिसके बाद हम डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग हेतु अपने पैतृक संस्थान राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान NICF नई दिल्ली पहुँचे। यहाँ हमें डाक एवं दूर संचार के महत्ता तथा बदलती प्रासंगिकता से परिचय कराया गया। संस्थान की नवीन आधुनिक सुविधाएं एवं संरचनाओं से परिपूर्ण प्राकृतिक प्रांगण में हमें विभागीय कार्यशैली, क्षमता और उद्देश्यों का प्रशिक्षण विभिन्न माध्यमों से निरंतर कराया जाता है।
इसी क्रम में हमें भारतवर्ष के विशिष्ट शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संस्थानों में जाकर अपनी कार्य कुशलता और क्षमताओं को ज्ञान से विस्तृत करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। हमने IIT मद्रास, IIM इंदौर, ASCI हैदराबाद, IIPA दिल्ली, AJNIFM फरीदाबाद एवं IIC मानेसर जैसे विभिन्न संस्थानों से विभिन्न विषयों पर विशेष अनुशिक्षण लिया है। महोदया, हमारी प्रशिक्षण रीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रशिक्षुओं के अकादमिक स्तर को बुद्धिजीवी स्तर तक विकसित करना है। इस दौरान हम शोध कार्य, थीसिस लेखन, सूक्ष्म मूल्यांकन एवं डिबेट आदि के माध्यमों से संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास की यात्रा संपन्न करते हैं। महोदया, प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग भारत दर्शन रहा है, जिस दौरान हमें अंडमान निकोबार और तवांग जैसे सुदूर क्षेत्रों की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर मिला और दूसरी ओर विविधता में एकता के भारतीय सूत्र का मर्म समझ आया। भारत दर्शन का एक हिस्सा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के नक्सल क्षेत्रों को दौरा करना था। यहाँ हमने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में दूर संचार प्रौद्योगिकी और अन्य कौशल उपायों की भूमिका को भी समझा। कक्षाओं, कार्यशालाओं व शैक्षणिक भ्रमण के मिश्रित प्रयोगों से हमें यह ज्ञात हुआ कि किसी भी योजना की सफलता जन भागीदारी एवं कार्यपालकों के दृढ़ संकल्प से ही संभव है। वर्तमान में जब हम विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है, ऐसे में 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा गवर्नेंस जैसी नई तकनीकों के माध्यम से ही सेवाओं को विकास के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का हमारा जज्बा ही इस सपने को साकार करेगा। महोदया, यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे समूहों में अधिकारी गणों में डॉक्टर्स, CA, इंजीनियर्स और मानविकी क्षेत्रों का सम्मिश्रण है और हम में से अधिकांश राज्य सेवा या प्राइवेट कंपनियों में कार्य का अनुभव भी रखते हैं। हम सभी ने देश सेवा हेतु सिविल सर्विस का माध्यम चुना है और हमें विश्वास है कि अपने विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के उपरांत हम विभागीय लक्ष्यों को ही नहीं बल्कि भारत सरकार के सारी लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए तत्पर होंगे। महोदया, समूह की ओर से मैं यह बताना चाहूँगा कि आज का यह गौरवमय क्षण सिर्फ हमारा ही नहीं अपितु हर जन समुदाय, समाज और उन विभिन्न राज्यों का है जहाँ से हम आते हैं। राष्ट्रपति महोदया, आपको भारतीय गणतंत्र की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के रूप में पाकर हमारा लोकतंत्र सशक्त, समृद्ध और धन्य हुआ है। आप देश के हर एक नागरिक के लिए लोकतंत्र की समावेशी व जीवंत विचारधारा की प्रतीक है और हमारे लिए अनंत प्रेरणा का स्रोत है। इस अमृत काल में आपके समग्र मार्गदर्शन में आज देश एक सच्चे विश्व गुरु के रूप में अपनी जिम्मेदारी विवेक, सौहार्द और विनम्रता से निभा रहा है और हमें विश्वास है कि आगामी वर्षों में भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जल्द ही शामिल होगा। धन्यवाद। जय हिंद। Now may I request Ms. Sapna Muthia, Officer of Central Engineering Services, to share her learnings and experiences. सर्वप्रथम मैं केंद्रीय अभियांत्रिकी सड़क सेवा के सभी प्रशिक्षु अधिकारियों की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सादर नमन करती हूँ तथा सभा में उपस्थित सभी महानुभावों और अधिकारीगणों का अभिनंदन करती हूँ। यह मेरे लिए अत्यंत ही गौरव एवं सम्मान का विषय है कि आज मुझे देश की सर्वोच्च नागरिक के समक्ष अपने अनुभवों और विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिला है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मेरा नाम सपना मुठिया है। मैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 2019 बैच की अधिकारी हूँ। मैं राजस्थान के करौली जिले के एक छोटे से गांव किरवाड़ा से संबंध रखती हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे उच्च शिक्षा दिलाने और आत्मनिर्भर बनाने को सदैव अपने जीवन की प्राथमिकता बनाया और इसी का परिणाम है कि मैं आज न केवल अपने गांव बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने के काबिल बन पाई हूँ। महोदया, मुझे गर्व है कि मैं देश के उस विभाग का हिस्सा हूँ जो देश में विकास की क्रांति ला रहा है। भारतीय सड़कों का जाल विश्व के सबसे बड़े सड़क जालों में से एक है जो देश के आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति एवं सामाजिक एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रखता है।
देश में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार करना सड़क परिवहन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में से एक है। इस संदर्भ में हमारा विभाग राष्ट्रीय राजमार्गों और महामार्गों को उच्च गुणवत्ता युक्त, विश्व स्तरीय और सुरक्षित बनाने के लिए बहुआयामी योजनाओं और नीतियों से यह सुनिश्चित कर रहा है। महोदया, एक प्रशिक्षु से जिम्मेदार लोक सेवक बनने का सफ़र सितंबर 2020 में भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी के 6 महीने के पाठ्यक्रम से शुरू हुआ। प्रशिक्षण के दौरान हमने विभिन्न विभागीय गतिविधियों, अभियांत्रिकी मानकों और नई तकनीकों पर ज्ञान प्राप्त किया है तथा हमें अकादमिक एवं व्यवहारिक दोनों आयामों पर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान हमने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं से अवगत कराया गया, जहां हमें प्रत्यक्ष रूप से कार्य देखने और सीखने का मौका मिला, जैसे चारधाम राजमार्ग परियोजना, जिसके अंतर्गत 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य चल रहा है। इसके साथ साथ हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के राजमार्गों पर चल रहे निर्माण कार्यों को भी देखा, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमने गोवा के जुआरी ब्रिज के निर्माण कार्य को देखा, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्ट्रेट ब्रिज है। इसके अलावा जोजिला सुरंग, जो कि एशिया की सबसे लंबी द्विदिश सुरंग होगी तथा श्रीनगर और कारगिल के संपर्क को साल भर सुनिश्चित करेगी, के निर्माण कार्य को देखने का अवसर भी मिला। 6 महीने के पाठ्यक्रम के समापन के बाद हमें विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और महत्वपूर्ण परियोजनाओं में नियुक्त किया गया, जहां हमें एक अधिकारी के रूप में विभाग की विभिन्न गतिविधियों को समझने और धरातलीय चुनौतियों से सीखने को मिल रहा है। प्रशिक्षण के उपरांत हम स्वयं को राष्ट्र निर्माण के लिए अधिक प्रेरित और समर्पित पाते हैं। राष्ट्रपति महोदया, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने दायित्वों को पूरी दृढ़ता और ईमानदारी के साथ निभाएंगे तथा देश में चल रही इस प्रगति की लहर को शीर्ष तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Now I request Mr. Shubham Bothra, Officer of Indian Naval Material Management Service, to share his experience. In the vast ocean blue, where ships roam with pride, there's a force that guides them through a crucial part of the tide. It's the logistics of the Navy, a seamless flow of supplies, from fuel and food to weaponry, a critical part of our guise. Without it, ships will falter, their mission left incomplete, a vital part that cannot alter in maintaining naval fleet. Honorable President and all the dignitaries, a very good morning to all of you. I, Shubham Bothra, Assistant Naval Stores Officer, a trainee officer of Indian Naval Material Management Service, ab initio course, feel honored on the opportunity presented to me today to share collective experiences of our training at this forum. Honorable President, the INMMS cadre works to look after the material logistics requirement of the Indian Navy. We started our training at INS Hamla, a logistic training base of Indian Navy at Mumbai on 1st November 2022. The training, apart from academics, has also inculcated discipline towards physical fitness through the morning PT and evening sports, thus forging lifelong friendships and camaraderie. Post-INS Hamla phase, we visited various material organizations wherein we studied and learned the peculiarities of each depot. We have also visited various weapon equipment depots, base victualling yards, naval armament depots, and naval dockyards of all the 3 commands. Attachment to the training institutes like INS Shivaji and INS Valsura gave us the practical aspects of material, mechanical, and electrical equipment fitted on board ships and submarine. The ship visit for many of us provided an opportunity to be among the first line of national defense. Here, we understood the challenges of ships' logistics to keep them ready to float, to move, and to fight. We are committed to explore solutions using the latest technologies for more efficient material management functions. Additionally, we are inspired by the dedication and commitment of our senior officers towards the nation's defense. Their views and expectations from the trainee officers were clear and unwavering, to be ready and prepared at all the times to serve the nation. In conclusion, I would like to express my deep appreciation for the effective curriculum and training management. I am confident that the gained knowledge and experience will serve us well as we continue to serve the Indian Navy to meet all the service expectations and contribute to national security with the mantra,
हर काम देश के नाम and assets first. Jai Hind. Nari Samajasya Kushala Vastukara, meaning woman is the skilled architect of the society. I believe we are fortunate that we have a strong woman with grit who truly represents the idea of India, who has fought all the odds to reach this apex position, to guide us to build an inclusive, progressive, prosperous and modern India. With great honor and humility, may I request Honorable President to address the gathering. Dear probationary officers of Indian Post and Telecommunication Accounts and Finance Service, Assistant Executive Engineers of Central Engineering Service and officers of Indian Naval Material Management Service, I extend my heartiest congratulations to each one of you on your selection to the government services. You have reached a significant personal milestone with your selection into the distinguished services. It is important that you keep in mind the greater objectives and opportunities that lie ahead of you. This is an exciting time to join the government service. Today, India is the 5th largest economy in the world. The nation is celebrating 75 years of independence as Azadi Ka Amrit Mahotsav. Your career in the Amrit Kal will coincide with the momentous growth of the country. As important functionaries in your respective services, it is vital that you align your individual's goal with the larger goals of the nation. Dear officers, trainees of Indian Post and Telecommunication Accounts and Finance Services, I am happy to see that your badge represents the diversity of the nation. I have been told that you belong to 17 different states and union territories. You come from different academic backgrounds. More than half of the officers in your group are from the engineering background. Some of you are also doctors and lawyers. 1/3 of the officer trainees are women. This is praiseworthy, but more needs to be done. One half of our population, our Nari Shakti, should be adequately represented in the workforce. Today, India has the world's second largest number of telecom subscribers with a user base of about 120 crore. We also have one of the cheapest telecommunication services in the world. Telecom sector has a crucial role in advancing digital connectivity for achieving rapid economic progress. The Digital India initiative is helping the government deliver various public services with more efficiency and transparency. However, we should continue to strive to connect the still unconnected masses, especially in the rural and remote areas. You shall be carrying out important functions of revenue assessment and collection of license fee and spectrum usage charges from the service providers. There is a rapid technological development taking place in telecommunication sector. I am sure that you will continue to innovate and use technology in performing your duties. Dear officers of Indian Naval Material Management Service, the Indian Navy has been successfully safeguarding our maritime interest, trade routes, and providing assistance during times of crisis. As members of this service, you will hold key responsibilities in ensuring availability of critical supplies to naval ships, submarines, and aircrafts. Maintaining large inventory is a complex task. It requires good knowledge of supply chain management, technical knowledge and equipment and maintenance producers. I am happy to know that
you are contributing towards the promotion and use of made in India products. This means you are helping realize our vision of Atmanirbhar Bharat. May your mantra, Har Kam Desh Ka Naam, continue to be your guiding light in meeting operational requirement of the Indian Navy. Dear probationers of Central Engineering Services, connectivity and road infrastructure is vital for the economic growth and development of the nation. Today, India is the second largest road network in the world. By discharging your duties responsibly, you are aiding the socio-economic development of the country. As part of your service, you are entrusted to build and maintain the national highways. In the recent years, the government has taken several initiatives to build new highways and upgrade the existing ones. This will ensure faster transportation of goods and ensure better connectivity for the people. This will also generate employment opportunities. It is your responsibility to ensure that the infrastructure projects you undertake are energy efficient, eco-friendly, and sustainable. You also have to ensure that these projects are accessible to our differently abled citizens. I have noticed the high number of fatalities in road accidents across the country. I urge you all to innovate and implement the best engineering and technological solutions to minimize road accidents. Ensuring safety of fellow citizens should be your highest priority. Dear young officers, you must serve the country with conviction and devotion to duty. You must uphold the highest standards of integrity and discipline while performing your duties. I wish you all a successful and fulfilling career. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.